Assalamu alaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, Ayesha, हम बात करेंगे how's it like being a millennial parent. So in Carnelian, you're the only one who's a millennial parent. So we'd like to know how's it like. इट्स बड़ा लोडेड सा सवाल था फरह वैसे तो लेकिन इट्स फन इट्स चैलेंजिंग एंड इट्स अ लॉट काइंड ऑफ बंडल्ड अप इनटू वन रोल और ये एज अ रोल जो आपका पेरेंट का भी होता है खास तौर पर मिलेनियल पेरेंट्स मेरे ख्याल से मेरे साथ एम्पथाइज करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा बिकॉज देयर सो मैनी हैट्स दैट वी हैव टू वेयर मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग most of us have those responsibilities at home as well कुछ parents के साथ भी हैं और फिर obviously हमारे अपने बच्चों की भी responsibilities हैं so a lot of that has to do with our roles as parents as well और उसकी वजह से impact भी होता है ये role तो I would say for millennials because our life is so fast paced it's very difficult to also explain to the previous generation कि हमारी क्या struggle है agreed that they always feel like they've had it tougher let's face it and they have also I mean I'm not at all trying to negate that however आजकल के दौर में भी अगर आप देखें जो biggest struggle जो मुझे नज़र आती है so social media is something which is very difficult to in essence control and obviously ये इसके effects हम आज भी देख रहे हैं of course बहुत सारे फ़वाइद भी हैं लेकिन there is definitely a flip side to it and it is definitely impacting people's personalities also and to what extent can you manage the impact of social media I think that is a struggle that probably the previous generation has no idea about so that is something that we're having to navigate literally from scratch and as it comes तो मेरे ख्याल से ये तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में हमें टाइम भी लगेगा वक्त भी लगेगा ये हम कर भी रहे हैं और अभी उस करते हुए सीख भी रहे हैं साथ साथ तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स डेफिनेटली देर आर एडवांटेजेस देयर डिसएडवांटेजेस लाइक विद parenting in any generation. However, I do hope that because there is so much riding on to us, because we are an informed generation, awareness levels I feel like हमारे ज़्यादा हैं हमारे पास ज़्यादा avenues हैं ज़्यादा conveniences हैं तो उसकी वजह से हमारे ऊपर वो responsibility और onus भी ज़्यादा है. Rightly put, and especially the social media part that plays huge role, definitely. Now, what are the difficulties that you face on daily basis with this parenting? आई थिंक ओके सो पेरेंटिंग टुडे ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है और ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है बाय द वे दिस इज ऑल्सो पीपल फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस हु टोल्ड मी दिस कि हमें वाकई लगता है कि बच्चे भी जिस तरह के बच्चे भी उसी किस्म के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं क्वाइट लिटरली सो किड्स आर दे आर ग्रोइंग अप अ लॉट फास्टर एज वेल दे आर मोर savvy with a lot of things that I probably would not have been as a 6 or a 7-year-old and so that is something I don't know if it's a challenge I'm not going to say that it's just a difficulty but it's definitely a challenge उस लिहाज से but it's also a lot of fun because आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं अंदाज़ा हो so I think that process is there but it is definitely challenging because of that दूसरी ये बात कि as a millennial parent there is a lot of multitasking especially if you're working तो देर इज़ सो मच दैट आई हैव टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस इतनी चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल पहले कभी मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इतना सारा कुछ मैं एक दिन के अंदर क्रैम कर सकती हूँ सो दैट इज़ अगेन इट्स अ चैलेंज बट इट्स ऑल्सो पुशिंग मी टू अचीव माई पोटेंशियल ऑन सम लेवल and I think like I said difficulty would be the social media aspect of it I think that is a difficulty right now and it will continue to be a difficulty because this is not something जो कि मैं इनकी ज़िंदगियों से eliminate कर सकती हूँ तो इसकी good और bad दोनों को manage करना इसके impact को manage करना ये मेरे ख्याल से will really prove to be the biggest challenge. Now, considering the challenges and how is it like being a parent, what is the advice and what do you suggest other people who are also going through the same experiences as you are? What do you advise them? Okay, so सबसे पहले I think to reach out for help. I think something that and we have begun to ऐसी बात नहीं है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है that we must do it all. You know, we must achieve it all. We have a lot of that expectation जैसे मैंने पहले भी कहा from ourselves. So I think it's a lot about asking other people for help. It's about making sure कि अगर
आप, बिकॉज एवरी वन इज आस्किंग यू, आप, हम इस वक्त एक ऐसे टाइम में है बिटवीन जो 30 to 40 वाली आपकी एक स्टेज होती है, उसमें देर इज अ लॉट दैट यू आर डीलिंग विद, योर पेरेंट्स आर Yeah. ग्रोइंग ओल्डर, देयर डिपेंडेंसीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन यू, देन ऑब्वियसली बच्चों की तो डिपेंडेंसी है ही है आपके ऊपर, तो आपको खुद भी थोड़ा सा कभी कभार अपने लिए वो वक्त निकालने की ज़रूरत है, और अगर इफ़ यू And also आर cut yourself एंड some कट्स slack. एग्जैक्टली, एंड आई फील लाइक you need to be able to just ask for that help. It's okay to admit that we don't have everything under control. So that would be my first advice for sure, because I think a lot of us still struggle with that. एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that is to ensure that we learn something from this experience as well. आप कोई पैदाइशी पेरेंट्स नहीं थे, आप भी सीख रहे हैं, और इस सीख को जो आपको एज अ पेरेंट मिलती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से कोई और रोल आपको नहीं सिखा सकता. सो देर इज़ सो मच दैट यू कैन टेक फ्रॉम इट, plug into your workspace, plug into, you know, just other facets, other relationships of your life as well, because I know for a fact that I was probably not as nurturing at all before I became a parent. And I think because of that, there's another layer that's been added to my personality. And I do think कि उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव आ गया है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर. देर इज़ लॉट मोर पेशेंस that I'm able to exercise now in my other relationships, be it work, be it, you know, at my friends or whatever it is, जो कि शायद मेरे अंदर पहले नहीं था. So really take that learning and plug it into your other relationships as well. I think that way you can benefit, you know, you can benefit as a person, and you can really come out on the other side as well. And I think lastly, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें मल्टीटास्क बहुत करना पड़ता है. So अगर मैं पेरेंटिंग एट द कॉर्पोरेट साइड इसको लेके चलूँ, सो देर इज़ अ लॉट दैट यू कैन नाउ गेट डन, एंड यू विल एक्चुअली सी कि इतनी चीज़ें होती थी जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे, सिंपली बिकॉज वी डेंट हैव द स्किल्स, वी डेंट हैव द आर्सेनल, वी डेंट हैव द टूल्स दैट वी नाउ डू बिकॉज ऑफ, you know, being a parent. So I think that is something that you should try to do. Yes, there are going to be moments when we get overwhelmed. There are going to be moments where we feel like we don't have everything in control. There are going to be times where, you know, जिस तरह हमारे बच्चे इस टाइम में बीमार बहुत पड़ रहे हैं, तो those are things that are out of your control and you are doing the best that you can. जैसे फरा अभी आपने भी कहा, cut yourself some slack and you know, just keep moving forward, because हमें पीछे नहीं देखता, हमें अपने बच्चों की वजह से सिर्फ आगे चलते रहना है. So that would be my advice. Thank you so much for joining us today and sharing your experience. Thank you so much, I Farah. hope it helps you in your journey as a parent.